2013, the year in which Black Lives Movement started by three radical black organizers in US. They created a black-centered political and will movements building project which was called as the hashtag Black Lives Matter. It was in response to the acquittal of the Trayvon Martin's murderer, George Zimmerman. Black Lives Matter in India too. Now let's see the diplomacy of Indians on Black Lives Matter. Everyone is beautiful, irrespective of their gender, creed, most importantly, guys, color. There is nothing called as racial discrimination in India. गोरा काला क्या होता है? आप सबने वो मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग तो सुना ही होगा, गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर, हाँ गोरा रंग तो दिन में ढल जाएगा. Yes guys, right. हाय नी किन्नी सोनी कुड़ी है, गोरी चिट्टी परफेक्ट, और एक एनु वेख लो, कर लो माई. हाँ जी मिसेस शर्मा, और की हाल चाल? हाँ जी सब सब बढ़िया. अरे नहीं, बस वही बिट्टू के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं. हाँ जी देखिए बस, अरे देखिए रिक्वायरमेंट्स कुछ ऐसी खास नहीं है. आपको पता है आज के ज़माने में बस क्या चाहिए, लड़की सुंदर हो, सुशील हो, संस्कारी हो. अरे कम से कम देखिए जी, बात बस घुमा फिरा के ये हो जाती है, लड़की बस घर को जोड़ के रखे. काले गोरे ये सब तो कहने की बातें होती हैं जी, ये सब नहीं चाहिए. बस सुंदर हो, सुशील हो और घर को जोड़ के रखे. हाँ जी. 5'7" हाइट हो और पतली होनी चाहिए. एंड जी मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमें बहू तो गोरी ही चाहिए. Girls should be encouraged and more promoted towards the sports education. देखो बात ऐसी होती है बेटा, कुछ बन जाओगे ना जिस दिन, उस दिन दुनिया तुम्हारे पीछे घूमेगी. इसीलिए स्पोर्ट्स में भी लड़कियों को बिल्कुल अव्वल नंबर पे होना चाहिए. स्पोर्ट्स एजुकेशन पे ध्यान दो, किसी अच्छे स्पोर्ट में पार्ट लो और पूरा अपने जी जान लगा के उसकी प्रैक्टिस करो. अरे अरे बेटा धूप में मत जाओ, शाम हो जाएगी तब जाना खेलने. काली हो जाओगी, शादी कौन करेगा तुमसे. If you ask me, I'll say दिल का साफ होना चाहिए. टॉल डार्क हैंडसम गोरा चिट्टा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, दिल का साफ होना चाहिए लड़का. इवेंचुअली तो शक्ल कहीं नहीं जाएगी, अकल काम आएगी. लुक एट हिम यार, ही इज सो डार्क. मैं अंधेरे में देखूँ ना तो मैं ही डर जाऊँ. गुलाब जामुन टाइप्स नहीं यार, कोई रसगुल्ला टाइप्स लड़का चाहिए. I can't breathe, said George Floyd. This was his last words. There is so much of work to be done on our own individual levels. We should end this discrimination. We should end this hatred. We have to do things on our own individual levels on a global platform, said Priyanka Chopra in one of his tweets. Get glow, get glow. अब अपनी स्किन को बनाएं लाइटर भी और फेयर भी, सिर्फ और सिर्फ 7 दिनों में. Well, this is the context, the Indian context of Black Lives Matter. You all saw different cases previously which we have showed, which we have tried to make you understand that India is a country which on one hand promotes the concept of unity in diversity, but on the other hand very hypocritically discriminates a person on the basis of its color. We need the end towards racial discrimination. Advertising plays a crucial role in creating an impact on humans. The main purpose of advertising is to influence how people think and what people think. Advertising can change your minds to the extent that your perception of reality will be changed completely. We have a Drugs and Magic Remedies Act of 1954. This is basically an act of the Parliament of India, and this act basically puts control on all those objectionable advertisements which possesses to claim any sort of magical claims or remedies for any product. So there was a recent amendment earlier this year which said that this act should also
include all the beauty products, all those beauty products which claim magical glow or such claims. So all the beauty products should be taken into consideration under this Drugs and Magic Remedies Bill, which was presented earlier this year. So the point is that on one side we talk about that we should not promote racial discrimination, or we should totally stand against it. But on the other hand, we do have products which explicitly promotes racial discrimination and provides magical claims to get a lighter, fairer skin tone. Till the time we have products that will be defining the concept of beauty on the basis of complexion, we can never end racial discrimination. If you like the video, don't forget to like, share and subscribe. And also don't forget to press the bell icon to keep yourself notified with all the updates.